So, good morning. This is the second class of the ethics series that we have started. So, in the first class, we had seen the basics of ethics, what is ethics, and we were introduced to some very basic terminologies in ethics, for example, morality, values, rationality, objectivity, compassion, sympathy, empathy, etc. And we had also seen the determinants of ethics. So today we will start with the dimensions of ethics. Okay. So when we talk about dimensions of ethics, we treat here ethics as a discipline or a field of study. So ethics as a field of study is majorly divided into four dimensions. Firstly, there is descriptive ethics, as you can see here. There is prescriptive ethics, there is meta ethics, and there is applied ethics. So, if we are, if we'll go to understand these terms, such as firstly there is descriptive ethics. So, as the name suggests, the descriptive ethics does nothing but just describes. It records and describes the ethical conduct, the moral standards that various group of people, various societies or various places that is observed there. For example, what kind of moral standards are followed by a tribal society? That will come under the descriptive ethics. And also, there are various religions. For example, there is Jainism. So Jainism follows Three Ratna, and there is Pancha Mahabhrata. So that are there. Those are their moral principles or moral standards that they follow. Similarly, in Hinduism, there is Varnasrama Dharma, and there is goal of life, which is called as Dharma, Artha, Kama, and Moksha. So, descriptive ethics will just describe what kind of ethical standards are followed where. So, it do not pass any judgment. So, its method is very much sociological. Just as sociology doesn't give any judgment, it just describes. Similarly, the descriptive ethics is it deals just with describing the various ethical phenomena at various societies or groups. Then next comes the prescriptive ethics. So prescriptive ethics does not just describes, it tells us how one ought to behavior, what is the right kind of conduct, and what should motivate the action of a human being. So as we all know that whenever we go to a doctor, आमे जब जन डॉक्टर के पाखु जाउजे से हमको गोटे प्रेस्क्रिप्शन लिखिक दउचंती प्रेस्क्रिप्शन रे से ए लिखुचंती कि which medicines you should take, what kind of diet you should take, okay, what should be avoided, what should be done, exercise should be done, which kind of exercise should be done. So similarly, the prescriptive ethics prescribes certain kinds of actions which are good or certain kind of actions which are bad. Okay, so this actually gives judgment about what is right and what is wrong, right? So this is very important from the point of view of ethics syllabus of our UPSC or OPSC. So which we will further read in detail, the prescriptive ethics. Then comes the meta ethics. Meta ethics. So basically the word meta means beyond. So whenever we are using meta before something, it means that we are going a step beyond. Okay. For example, आम जो मेटाफिजिक्स बोली यूज करुचे मेटाफिजिक्स बोली आम जो कहूचे से आम फिजिक्स टू बियॉन्ड जाऊे आमर आमर दायरा आमर जो बाउंड्री ऑफ स्टडी आउ टे ब्रॉड हो जाऊे राइट। तो सेमती जो आम मेटा एथिक्स कहूचे आम एथिक्स टू आ गोटे स्टेप बियॉन्ड जाऊे और डीपर जाऊे। फॉर एग्जांपल एथिक्स कौन कहबो ना दिस एक्शन इज गुड, दिस एक्शन इज बैड, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग। बट मेटा एथिक्स विल आस्क what is the meaning of good, good माने वास्तव रे कौन, राइट। सो से सब क्वेश्चन सहित डील करे मेटा एथिक्स।
meta ethics, and lastly there is applied ethics. Applied ethics कौन? Applied ethics हो सेटा जतबेले आमे moral principle, ethical principles को गोटे specific real life issue रे apply करूचे सेतबेले आमे ताको कहूचे applied ethics. For example, there is medical ethics. Okay, ethics when applied in the field of medicine, that is called as medical ethics. Medical ethics रे बहुत प्रकार issue अछि. For example, euthanasia बजा को हमें mercy killing बोली कहूचे. Okay, India रे euthanasia is allowed but तारो passive form. India रे passive euthanasia is allowed, किंतु ताको नहीं कि भी गोटे बड़ डिबेट अछि whether euthanasia should be allowed or not. Okay, तो तारो आर्ग्युमेंट एटा आसे कि आमे जदि काहाको लाइफ दे पारुने then should we be have the authority to take someone's life. Okay, एवं तार गुडाए मिसयूज हबार मध्य संभावना अछि. So euthanasia जोटा कि medical ethics रे आसुची, that is a form of applied ethics. Similarly आमे देखिबा environmental ethics. Okay, आजिरो दुनिया रे आमे sustainability, sustainable development रो कथा कहूचे. तो सब बेले गोटे क्वेश्चन आसुची growth versus development. Growth is very much important. Growth हमरो करिबा दरकार. Without that हमरो economy आगो को जाई परिबा नाही. As a civilization we cannot grow, right? So here comes the debate of ecology versus economy. Gandhi ji gote katha kahitile, nature provides for everyone's need but not everyone's greed. तो तेणु करी से जो debate regarding growth and environmental sustainability, that comes under environmental ethics जोटा कि applied ethics रो गोटे part. Similarly आमे जदि देखिबा, there is business ethics and there is bioethics also, ethics related to the field of biology जो थरे कि आमे genetically modified organisms, gene therapy, gene manipulation, DNA fingerprinting, ए सब जिनसर ethicality, ए सब जिनसर moral dimensions को discuss करूचे, and it is applied ethics. It comes under applied ethics. So amara ethics ro syllabus hisabare jota most important thing seta hela prescriptive ethics. So next ame dekhiba what is prescriptive ethics and the various parts of prescriptive ethics. So prescriptive ethics जो थे ethical code of conduct, ethical conduct and ethical action is prescribed, actually prescribed by the proponents, that is called as prescriptive ethics. So prescriptive ethics रे, so its nature is basically philosophical and prescriptive. Its nature is philosophical and prescriptive. जेमते हमें देखी दिले that descriptive ethics रे, descriptive ethics method is mostly sociological. Okay, it doesn't pass a judgment, but prescriptive ethics रे कौन होची ना ये actually गोटे judgment दबो what is right and what is wrong. Okay, so its nature is philosophical and prescriptive, and its focus is on how people ought to behave. It prescribes how people ought to behave. Actually मनीष किपरि भाबरे तार नैतिक जीवन रे व्यवहार करिबा दरकार ता विषय रे हमकु प्रेस्क्रिप्टिव एथिक्स कहि थाए. तापरे इट इवैल्युएट्स मोरल स्टैंडर्ड्स. एटा मोरल स्टैंडर्ड्स गुडी को मध्य इवैल्युएट करथाए. तो प्रेस्क्रिप्टिव एथिक्स को आमे मेजरली तीनटा सब ब्रांच रे डिवाइड करछु. प्रेस्क्रिप्टिव एथिक्स has been divided into 3 major sub branch जो थरे आसीबो deontology, consequentialism and virtue ethics. Okay, तीनटा हमर सब ब्रांच अछि जेमति कि deontology, consequentialism and virtue ethics. ए तीनटा स्कूल को आमे इन डिटेल पढिबा. ओके, प्रथमे आसीबो deontology.
डिओंटोलॉजी ये जो वर्ड डिओंटोलॉजी आसीची ये जो वर्ड डिओंटोलॉजी आसीची एटा आसीची गोटे ग्रीक वर्ड रू एटा आसीची गोटे ग्रीक वर्ड रू जोटा कि हैला डिओन ग्रीक वर्ड डिओन DEON the Greek word dion which means duty. Dion means duty. Okay, so deontology means duty based ethics. Okay, so it was developed by Immanuel Kant. Immanuel Kant is the chief proponent of the deontological school, and it emphasizes duty and moral rules rather than consequences. It does not think about what the consequences will be. Okay, it is focused on the duty, whatever duty you have as a citizen, as a human being, or anything, that duty you should follow in every situation, irrespective of the consequence of that duty. Alright, so morality is rooted in the categorical imperative. So it is a term. जो term हमारा आसिला categorical imperative. Categorical imperative it was given by Immanuel Kant. Immanuel Kant कहते ना किछि गुड़ाए universal moral law अच्छी किछि गुड़ाए universal moral laws अच्छी जहाँ को आमे कैटेगोरिकल इंपेरेटिव कहिबा एवं एगुड़िक केबे भी वायोलेट हेबा कथा नुह एगुड़िकर व्यतिक्रम केबे भी हेबा दरकार नुहे जदि व्यतिक्रम घटिला तेबे दैट एक्शन कैन नॉट बी टर्न एज एन एथिकल एक्शन in order to remain ethical we have to follow this universal moral laws जहाँ को से कैटेगोरिकल इंपेरेटिव कहथिले कैटेगोरिकल इंपेरेटिव को हमें आहुरी डिटेल्स रे मध्य पढ़िबा. Okay, so deontology is guided by reason. It is guided by reason. Deontology कौन होची ना reason बा तर्क द्वारा परिचालित. Okay, and universal law जेमती मो कहिले किछि गुडा universal law अछि जोडा केबे भी भूल हेई परिबो नाही जेमती do not lie जेमती do not steal do not harm anybody. Okay, यार कौन से व्यतिक्रम नहीं in every situation this will fit. Okay, so these are termed as universal moral principles or categorical imperative जहाँ को हमें आहुरी डिटेल्स रे next slide रे पढ़िबा. All right, all right, all right. So here we have written key formulations of categorical imperative. So categorical imperative by universal moral law आमे जहाँ को कहिले so that is divided into two parts, that is the key formulations of categorical imperative are divided into two key points. Firstly, there is universality. The universality principle. Universality principle says the universality principle says the universality principle says that act only on that maxim which you can will to become a universal law. That माने या माने होची कांट एठी कहउचंती that तुमे केवल सेपरी कार्य करो. Okay, only on that maxim maxim means सिद्धांत सही सिद्धांत अनुसार कार्य करो जोटा कि तुमे चाहिबो will माने इच्छा करिबा जोटा कि तुमे इच्छा करिबो कि गोटे यूनिवर्सल लॉ हे जाओ. ओके, सपोज मैं गोटे एग्जांपल दोछि जोटा कि द्वारा तुम माने बुझी परिबो भलरे. एग्जांपल सपोज आमे बेले बेले गोटे मिछ कथा कहि दो. ओके, we do tell lies sometimes. ओके, स्पेशली जो लाई कहबा द्वारा कहार क्षति हुए नहीं जोड़ा को बेसिकली हमें व्हाइट लाइज बोली कहू. ओके, जहाँ को हमें व्हाइट लाइज बोली कहू. जहाँ को हमें व्हाइट लाइज बोली कहू. ऑलराइट, जहाँ को हमें व्हाइट लाइज बोली कहू.
ओके कहार किसी हार्म होनी सपोज कहार टिके हेल्प करबा पई कहाको को गोटे पनिशमेंट रु बंचेबा पई किंबा कहार जीवन बंचेबा पई आमे किछि बेले मिछ कथा कहि दो ओके जोड़ा के हमें व्हाइट लाई बोली किंतु अकॉर्डिंग टू कांट आमे जते बेले से लाई कहूछु किंबा से मिछ कथा कहूछु आमे कोन करूछु ना द एक्ट ऑफ लाइंग जो मिछ कहिबार जो कामटा आमे करूछु आमे कौन चाहिबा कि से जो कामटा आमे करूछु से जो मिछ कहिबार कामटा आमे करूछु सेटा गोटे यूनिवर्सल मोरल लॉ हे जाऊ समस्ते सेटा करबा को लागंतु आमे केबे भी चाहिबानी राइट कारण सत सुनिबा समस्तन को पसंद एवरीवन लाइक्स टू बी टोल्ड द ट्रुथ समस्तन ट्रुथ प्रति गोटे लाइकनेस अछि ओके एवं जदि आमे ताकू गोटे यूनिवर्सल लॉ हिसाब रे एक्सेप्ट करिनबा मिछ कहबा बा लाए कहबा को जदि आमे गोटे यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल हिसाब रे एक्सेप्ट करबा को जिबा तबे कोन हबो ना सोसाइटी रे ट्रस्ट डेफिसिट देखा जिवो रिलेशनशिप वीक रिलेशनशिप्स रे will become weaker right so that is why Kant kuhanti that act only on that maxim which you can will to become a universal law तुमे केवल से हिसाब रे काम करो जहा को तुमे चाहिबो कि गोटे यूनिवर्सल लॉ हे जाऊ राइट तेणु मिछ कहबा चोरी करबा कहा को हार्म करबा कहा को मारिबा हत्या करबा किल करबा एगुडा को कोनोसी भी क्षेत्र रे एक्सेप्टेबल हेबो नाही बिकॉज़ सेटा को तुमे कोनोसी परिस्थिति रे यूनिवर्सल हे जाऊ समस्त ताको ऑब्जर्व करंतु बोली तुमे चाहिबो नाही so that is the principle of universality and secondly a key formulation of categorical imperative hela human dignity माने कोन कहउचंदी कांट that treat humanity whether in yourself or others always as an end and never merely as a means so according to Kant humanity should always be treated as an end okay humanity को आमे केबे मनुष्य को निज को किबा अन्य मान को केबे गोटे लाइक गोटे मीन्स हिसाब रे गोटे माध्यम हिसाब रे यूज करिबा परिबा नाही फॉर एग्जांपल किछि लोक कोन कहंती करंती माने कर आपण गोटे कंपनी रो तुमे मालिक अछो राइट तो तुमे कोन करूछो लोक मान को एक्सप्लॉइट करूछो जो लेबर माने काम करूछंती तुमे तांकर एक्सप्लॉइटेशन करूछो टू गेन व्हाट टू गेन प्रॉफिट तो तुम प्रॉफिट गेन करबा पई तुम ह्यूमैनिटी रो डिग्निटी रक्षा करिलो नाही यू यूज्ड देम ओके यू यूज्ड देम यू मिसयूज्ड देम यू ओवरयूज्ड देम ओके सो ए जिंस को डिओंटोलॉजी कहउचंती दिस इज अगेंस्ट ह्यूमन डिग्निटी राइट सो ए दुटा प्रिंसिपल द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सैलिटी एंड द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी ए दुटा आसिला हमर कैटेगोरिकल इंपरेटिव रो की फॉर्मुलेशन ए दुटा जिंस को हमको ध्यान रे रखि कि एक्ट करबा को पड़िबो सो दैट हमर एक्ट टा ड्यूटी एंड रूल सहित अलाइन हे परबो एंड ताकू हमें गोटे एथिकल एक्ट बोली कहि परिबा ओके then deontology stresses that morality does not depend on personal gain social approval or outcomes okay मुझे एमती कहली deontology रो full focus is on duty and rule okay it stresses that morality does not depend on personal gain से जो ड्यूटी एंड रूल बेसिस रे काम करबा द्वारा तुमरो पर्सनल गेन हैला कि नहीं केते हैला नहीं किंबा सोशल अप्रूवल मिलला कि नहीं तुम्हें तुमरो ड्यूटी फॉलो करूछ तुमको सोसाइटी रो अप्रूवल मिलुची कि नहीं अप्रिशिएशन मिलुची कि नहीं और तार आउटकम तार कॉन्सिक्वेंस बा परिणाम जहाँ भी हो ना कहीं की ओके यू शुड ऑलवेज स्टिक टू द ड्यूटी एंड रूल्स दिस इज deontological school of ethics given by Immanuel Kant okay so आमे जदि किसी एग्जांपल देखिबा हमर रियल लाइफ रे अकॉर्डिंग टू डिओंटोलॉजी ताहले आमे कहि परिबा आमे बहुत समय ट्रैफिक रूल तो निश्चित भाव फॉलो करूछि जेतबे डे टाइम अछि जेतबेले एक्चुअली भिड़ अछि बहुत मात्रा रे लोक माने जिबा आसीबा करूचंती से टाइम रे वी आर समवट बाउंड टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स बट सपोज वी आर गोइंग इन मिडनाइट ओके मिडनाइट रे हम जाउछे and there is a traffic signal there is a red signal and there is no other vehicle than yours तुमे जदि सेटा को ब्रेक करके क्रॉस करके
पार हो जिवो ताहले मध्य किछि प्रॉब्लम हबो नाही जोड़ा कि मोस्ट ऑफ द टाइम आम मैंने करू किंतु अकॉर्डिंग टू कांट तुम्हें जेहेतु रूल्स को ब्रेक करूछ द ट्रैफिक रूल को ब्रेक करूछ सो दैट वुड not be accepted as an ethical act in any case okay so एटा कहउचंती कांट डिओंटोलॉजिकल एथिक्स रे राइट तापरे आमे गोटे आमे जदी आउ गोटे एग्जांपल देखिबा द इंग्लैंड रे गोटे लोक कथा चले जोटा को कहा जाए हमर रॉबिन हुड कर कहानी द स्टोरी ऑफ रॉबिन हुड ओके रॉबिन हुड कर कहानी रॉबिन हुड के थिले ना रॉबिन हुड यूज्ड टू रॉब पीपल से लोक मानकठू धन संपत्ति छड़े के आणुथिले जो माने एक्चुअली वेल्दी धनी लोक थिले तांकटू से धन संपत्ति चोरे के आणुथिले ओके रॉब करके एंड ही यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट दोज अमंग द पुअर से पुअर मानक भितरे ताको डिस्ट्रीब्यूट कर दउथिले ओके सो या द्वारा कोन होतले ना पुअर पीपल वेर बेनिफिटेड ओके पुअर पीपल वेर बेनिफिटेड एंड दे यूज्ड टू प्रेज से माने रॉबिन हुड को प्रेज करुले से माने ताको ताकर हीरो बोली भाबुथिले किंतु अकॉर्डिंग टू डिओंटोलॉजी एंड अकॉर्डिंग टू इमानुएल कांट रॉबिन हुड कैन नॉट बी टर्म्ड एज अ हीरो से हीरो कहा जाय परिबे नहीं अकॉर्डिंग टू डिओंटोलॉजिकल स्कूल ऑफ एथिक्स because he goes against certain universal moral principles which is stealing from anyone से wealthy लोगों को तो steal करुथिले rob करुथिले right but that is wrong because that cannot be accepted as a universal moral principle जोटा universal moral principle हे परिबने that act is anyway wrong तार consequences भलो हो किंबा खराब हो that act is never an ethical act okay this was said by Immanuel Kant in deontology however certain criticism are there किछि criticism अछि डिओंटोलॉजी स्कूल रो जेमति सब स्कूल ऑफ थॉट रो क्रिटिसिज्म थाए सेमति डिओंटोलॉजी रो मध्य अछि जेमति कि डिओंटोलॉजी को कहा जाय डिओंटोलॉजी को कहा जाय टू रिजिड बोली कहा जाय इट इज टू रिजिड विथ द ड्यूटी एंड रूल्स ओके टू बाउंड बाय ड्यूटी राइट एंड इट इग्नोर्स द consequences बेले बेले प्रैक्टिकल लाइफ रे कोन करबा को हुए ना कॉन्सिक्वेंसेस को नजर रे रखी कि कॉन्सिक्वेंसेस परिणाम को नजर रे रखी कि हमको एक्शन नेबा को पड़े किंतु अकॉर्डिंग टू डिओंटोलॉजी आमे कॉन्सिक्वेंस कथा भाबिबा कथा ही नुहे ओके सो दैट कम्स अंडर द क्रिटिसिज्म दैट इट इज टू रिजिड एंड इट इग्नोर्स द consequences all right so next we will see what is डिओंटोलॉजी परे आमे पढिबा कॉन्सिक्वेंशियलिज्म डिओंटोलॉजी परे आमे पढिबा कॉन्सिक्वेंशियलिज्म ओके consequentialism so consequentialism as the name suggests consequentialism comes from the word consequences comes from the word consequences consequence आ consequence माने कोन consequence माने होची outcome result और परिणाम so consequentialist school of ethics हमको एडा कहबो that act only is ethical which has a good outcome a good result गोटे भलो परिणाम good consequence जहार थिबो that action is an ethical action okay that is the major thought behind the consequentialism school okay so consequentialism school को आउ मध्य कहा जाए teleological school मध्य कहा जाए consequentialism को teleological school मध्य कहा जाए teleology comes from the word teleos means है purpose teleos means है purpose okay so purpose driven school which is similar to outcome
or result driven ethics. Okay, so consequentialism ro गोटे major school है utilitarianism. Utilitarianism is a sub school of consequentialism and the most widely known school of consequentialism, utilitarianism. So, okay, so utilitarianism is the most well-known form of consequentialist ethics. Okay, so what does utilitarianism do? Utilitarianism judges morality of an action based on its outcome rather than intention or duty. Intention or duty जहाँ भी थाउ ना कहीं कि जदि गोटे act रो outcome भलो आसुची then that act is an ethical act according to consequentialism. So chief proponents of consequentialism were Jeremy Bentham and J.S. Mills. J.S. Mills, John Stuart Mills. Jeremy Bentham and John Stuart Mills, these two were the chief proponents of consequentialism. Okay, so the guiding principle of consequentialism is the greatest happiness principle. Greatest happiness of greatest number. Consequentialism or specifically utilitarianism would vouch for greatest happiness for greatest number, greatest happiness for greatest number. Okay, so this is the guiding principle behind consequentialism. And there is a concept of pleasure and pain. Okay, pleasure and pain ro gote concept ame consequentialism re dekhiba ko pau or utilitarianism re. Okay, humans are governed by the desire of pleasure and the avoidance of pain. Ethical decisions should maximize happiness and minimize suffering, right? So utilitarian school kon kuhe na humans are governed by pleasure and pain. Everybody likes pleasure and everybody wants to avoid the pain, right? So our actions should be directed in such a way that it maximizes pleasure and minimizes pain. Okay, so for this matter, Jeremy Bentham, the chief proponent of utilitarianism, Jeremy Bentham had devised a tool which he named as hedonistic calculus. Remember this term, hedonistic calculus. Hedonistic calculus. Jeremy Bentham कौन करिथिले ना गोटे hedonistic calculus रो example देथिले. What is this calculus? This is not nothing but just like a weighing tool. And here what was he weighing? Se कौन ओजन करुथिले ना he was weighing pleasure and pain. Pleasure and pain को से वे करुथिले, मेजर करुथिले, मापुथिले गोटे एक्शन रे केते प्लेजर रो इंक्रीज होची आ केते पेन रो डिक्रीज होची, that only will decide whether that action is ethical or not, right? Okay, so there is a principle of pleasure and pain. Okay, increasing pleasure and decreasing the pain is the major philosophy behind utilitarianism. Okay, and after Jeremy Bentham, okay, the second proponent who is J.S. Mills, John Stuart Mill, what he gave a principle of higher and lower pleasure, the concept of higher and lower pleasure. Okay, so से कहिले आमे pleasure विषय तो कथा होजे, we are talking about pleasure and pain, but are all pleasures the same? सब pleasure को आमे गोटे category रे रखी परिबा कि? तो according to J.S. Mills, not all pleasures are equal. सब प्रकार pleasure equal नुहंती, right? Intellectual pleasures is always greater than bodily pleasure. Okay, गोटे pleasure अच्छी जोड़ा आम मन को food रू मिले, हम like
आमे किसी भलो खाद्य जतबेले खाऊ then we get pleasure, and there are other kinds of bodily pleasure, good sleep, good food, okay, and there are other very what we say them as bodily indulgence जो थे हमको बहुत comfort मिले, right? So those are called as termed as lower pleasure according to John Stuart Mills. Okay, those are lower pleasure, but those actions, okay, those pleasures which give us an intellectual stimulus, which are intellectually uplifting. For example, reading a book, learning a new skill, okay, learning a new concept, okay, these come under the higher pleasure, higher pleasure, okay. So in this consequentialist school, which is otherwise known as teleological school, utilitarianism is the most widespread school. Okay, so utilitarianism has its chief proponents Jeremy Bentham and John Stuart Mills, and the principle that guides consequentialism or utilitarianism is the greatest happiness principle, which means greatest happiness for the greatest number. And Jeremy Bentham gave the concept of pleasure and pain. That action is an ethical action which increases pleasure and decreases pain. He also gave the concept of hedonistic calculus. Okay, uh, then came J.S. Mills, John Stuart Mills, who refined Jeremy Bentham's concept. Okay, he refined Jeremy Bentham's concept and gave the concept of higher and lower pleasure. Not all pleasures are equal, but there are higher and lower pleasures. All right. Okay. So this was all about consequentialism. Then we will okay. So let us see some examples of consequentialism. Okay, examples of consequentialism. If we look at आमे deontology पढ़िला बेले मु कहितली तुमको about रॉबिनहुड. ओके, रॉबिनहुड कौन करुथिले ना से धनी लोक बा जो माने वित्तशाली लोक थिले तांको ठारू से वेल्थ को एकाठी करके से डिस्ट्रीब्यूट कर दोथले पुअर मानक पाखरे आनिकी. ओके, सो that was wrong according to deontology because that was against the rule. किंतु आमे जदि consequentialism विषय कहिबा ताले consequentialism will somewhat support it because the consequences, the parinama किंबा outcome was good. It was increasing happiness among people. Okay, so consequentialism will somewhat support the act of Robin Hood. And आमे जदि recent रे example नबा ताले हमरो 2019-20 रे 21 रे आमे देखिथिले बहुत भयंकर wave of COVID-19 कोरोना रे, right? तो सेते बेले कोन करे जाइथिला ना there was a vaccination drive. Okay, आमे आमे mass vaccination करिथिले लोक मानकर, right? So ता परे देखावाला परवर्ती मुहूर्त रे that किछि लोक complain कले that जेहेतु आमे vaccine नेचु we are seeing some changes in our body. किछि लोकंकर बीपी हाई रहउचे, किछि लोकंकर ब्रीदिंग रे असुविधा होउचे, किछि लोकंकर डाइजेशन स्लो हो जाइचे. सो दीज काइंड ऑफ कंप्लेंट्स आमे सुनिबा को पाउछु आफ्टर कोविड वैक्सीनेशन. बट कोन आमे केवल एई सिम्पटम किछि लोकंक भितर जो सिम्पटम देखा गला सेथि पय आमे कोन पूरा वैक्सीनेशन ड्राइव को बंद कर दबा राइट थिला कि नो, बिकॉज सेठी आमे प्लेजर एंड पेन को कैलकुलेट करके आमे डिसीजन नेले ना वैक्सीनेशन ड्राइव शुड डेफिनेटली बी देयर. जदि भी तार किछि साइड इम्पैक्ट किंबा सिम्पटम्स किछि लोकक पाखे रहउचे स्टिल इट शुड बी डन बिकॉज इट इज इन फेवर ऑफ ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर. बहुत लोक वैक्सीनेशन द्वारा रक्षा पाई गले, राइट? जेति कि हेला बहुत लोक से द्वारा रक्षा पाई गले. जदि आमे वैक्सीनेशन ड्राइव करि न थांते ताहेले मे बी क्षति आउ बहुत अधिक आइतांता. सिमिलरली लॉकडाउन रो कथा हम जदि नबा 2020 रे आमे बहुत लंबा पीरियड जाए इंडिया रे लॉकडाउन रहिला, राइट? लोक माने तांको घरे कन्फाइंड हे कि रहिले गोटे प्रकार इट वाज प्रोहिबिटेड कि तुमे घरु बाहर को जाई कि लोक मान सहित मिलामिशा करिवो
this was prohibited by the government. So jodio एटा आमको कन्फाइंड करके रखिला किछि समय पर्यंत, still it had a good consequences because आमर कौन हैला ना आमर कंटामिनेशन बा डिजीज रो स्प्रेड जोटा सेटा बहुत मात्रा रे आमे कंट्रोल करि पारले ड्यू टू लॉकडाउन. ओके सो ए सब एक्ट जेमती मु लॉकडाउन कथा कहली, जेमती मु वैक्सीनेशन ड्राइव कथा कहली, राइट. सो या पछरे जो प्रिंसिपल काम करूची दैट इज ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल. आमे केते लोकन को एक्चुअली बेनिफिट दे परिबा इवन इफ few people are left or few aspects are being affected, तथापि हमको गोटे बिगर पिक्चर रे जदि बेसी मात्रा रे हमरो लाभ होची, then we should not think about it and we should act on it. Okay, this is consequentialism school, right? This is consequentialism school of thought. Okay, so next what we will see is the virtue ethics. Virtue ethics is the third kind of school जोटा हम prescriptive ethics रे देखी थिले about आमे कोन देखी थिले तीनटा जिंसो देखी थिले. फर्स्ट हला deontology, सेकंड हला consequentialism जोटा हम recently देखिले, एवं थर्ड हला virtue ethics. Okay, virtue ethics कोन कहूची ना a good life depends on being a good person, not just on following rules or seeking result. Following rule hela deontology. Okay, following rule hela deontology. Following rules hela deontology. Okay, going with the consequences hela consequentialism. Okay, but virtue ethics kahibo that a good life depends on being a good person, not just on following rules or seeking results. Okay, it emphasizes developing the right character. This is the most important thing about virtue ethics, developing the right character so that doing the right thing becomes natural and leads to a truly happy and flourishing life. So jemti amaro deontology school re it was duty, in consequentialist school it was outcome. Okay, so virtue ethics re it is virtue ethics re it is character building. Virtue ethics re it is character building. Okay, so when someone's character is built in such a way that it is truly virtuous, then whatever act he does will automatically be ethical. Okay, that is the core philosophy behind virtue ethics, right? So here it says that virtue ethics emphasizes developing the right character so that doing the right thing becomes natural and leads to a truly happy and flourishing life. Okay, तो एथिरे हमर जो चीफ प्रोपोनेंट जो माने प्रमुख प्रवर्तक वर्च्यू एथिक्स रो थिले से माने थिले सॉक्रेटिस, प्लेटो एंड एरिस्टोटल. Socrates, Plato and Aristotle. Plato was the disciple of Socrates and Aristotle was the disciple of Plato. Okay, then Aristotle को disciple थिले Alexander the Great. Alexander the Great थिले Aristotle को disciple, right? So this way the Guru Sishya Parampara goes, right? So these were combinedly called as ancient. These were combinedly called as the ancient Greek philosophers. Ancient Greek philosophers, right? Socrates, Plato and Aristotle. Okay, so first हमें देखिबा Socrates. Socrates को मध्य कहा जाए the originator of ethics or the father of ethics. Okay, तांकर बहुत famous गोटे dialogue जहाँ को कहा जाए कि Socratic dialogue. Socratic dialogue. Okay, he emphasized a lot on having a dialogue, right? Having a dialogue to reach to the main point, to the main theme of where we are lacking. Okay, that is Socrates. So Socrates used to tell that I cannot teach you anything, I can only
I can only make you think. I cannot teach you anything, but I can only make you think. एथुरु आमे कोन जानुचे ना he was a staunch supporter of critical thinking, a staunch supporter of critical thinking, right? सो क्रिटिकल थिंकिंग रो ये जने बहुत बड़ सपोर्टर थिले सॉक्रेटिस. ओके, सॉक्रेटिस कहूतिले आ मध्ये से कहिथिले दैट एन अनएग्जामाइंड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग. जो जीवन को आमे केबे एग्जामिन करिने, केबे परीक्षण करिने कि आमे कोन करूछे, जीवन रो लक्ष्य कोन, जीवन रो वास्तवता कोन, एवं केवल जीवन बंची चलीछे. According to Socrates, that is not a life worth living. तेणु करी से कहूतले that an unexamined life is not worth living. So Socrates करो whole philosophy or Socrates करो whole ethics was based on this critical thinking and rationality. Critical thinking and rationality. Okay, this was Socrates. तापरे आमे देखिबा प्लेटो. प्लाटो थिले सॉक्रेटिस कर शिष्य, वेरी डियर डिसाइपल. ओके, प्लाटो मध्य सॉक्रेटिस कर रास्ता रे ही चलुथिले. ही वाज आल्सो अ क्रिटिकल थिंकर, बहुत बड़ क्रिटिकल थिंकर थिले. एवं प्लाटो आल्सो क्रिटिसाइज सॉक्रेटिस, राइट? प्लाटो मध्य सॉक्रेटिस कर गुडाए थ्योरी को क्रिटिसाइज करथिले. ओके, जेतेबेले प्लाटो को पचरा गला, प्लाटो that you are a disciple of Socrates, Socrates तुम्हारा गुरु, but how could you criticize your guru? तुम्हें तुम्हारा गुरु को केमती समालोचना करि परिबो, राइट? सेतेबेले प्लाटो कहिथिले yes, Socrates is my guru, right? प्लाटो कहिथिले that Socrates definitely मोर गुरु, but and Socrates is also very dear to me, right? Socrates is dear, but truth is dearer. Truth is dearer बोली से कहिथिले, right? तापरे आसिले प्लाटो को जदि आमे एथिक्स को देखिबा, एथिक्स रे प्लाटो को कंट्रीब्यूशन कोन ना, एथिक्स रे प्लाटो देथिले फोर कार्डिनल वर्च्यू. फोर कार्डिनल वर्च्यू ऑफ अ गुड लाइफ. फोर कार्डिनल वर्च्यूज ऑफ अ एथिकल लाइफ, ऑफ एन एथिकल लाइफ. चारिटा कार्डिनल वर्च्यू से देथिले जहाँ को कहा जाए जस्टिस, जस्टिस, प्रूडेंस. प्रूडेंस माने नथिंग बट विजडम, राइट? जस्टिस, प्रूडेंस, फोर्टिट्यूड. फोर्टिट्यूड, फोर्टिट्यूड माने नथिंग बट करेज. करेज, जस्टिस, प्रूडेंस, फोर्टिट्यूड एंड टेम्परेंस. टेम्परेंस, जस्टिस, प्रूडेंस, फोर्टिट्यूड एंड टेम्परेंस. ताको हमें एमती मन रखि परिबा JPFT. सो प्लाटो को कंट्रीब्यूशन टू एथिक्स कोन ना, दिस फोर कार्डिनल वर्च्यूज. इफ यू आर ऑब्जर्विंग जस्टिस, you are observing prudence. Prudence means wisdom. If you are observing fortitude, that means you are courageous enough. And if you are observing temperance, which means moderation, moderation in action, self control, right? If you are following these four virtues, then you are an ethical person. So this was the contribution of Plato to ethics. Okay, right? Then comes Aristotle. So ये जो virtue ethics रे आमे तीनी जन chief proponent को पढ़िले, Socrates, Plato and Aristotle. So the most important for us will be Aristotle. आम पई सबुठु important हेले Aristotle. Okay, okay, okay. आमे देखिबा Aristotle करो contribution to virtue ethics कोन. Aristotle and virtue ethics. Okay, Aristotle and virtue ethics. Aristotle कहिथिले eudaimonia. eudaimonia रे concept से देथिले. eudaimonia कोन? eudaimonia होची गोटे happy life, a fulfilled life, a flourished life. Okay, eudaimonia means basically तार simple अर्थ रे माने हैला happy life. And happy life kona, what is a happy life? Happy life is a life full of virtue. Okay, जो life रे
वर्च्यू गुड़ाक भरी हेकी अच्छी केवल से जीवन ही होची गोटे सुंदर सुखी बा हैप्पी लाइफ ओके से कॉन्सेप्ट को कहा जाए यूडाइमोनिया 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 राइट तपर एरिस्टोटल आउ गोटे सुंदर कॉन्सेप्ट देखले व्हिच इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गोल्डन मीन से तो प्रथमे कहले यूडाइमोनिया कथा हैप्पी लाइफ कथा हैप्पी लाइफ हम केमती लीड करबा जदी हमें लाइफ रे वर्च्यू को इंपोर्टेंस दवा हम लाइफ रे जते वर्च्यू अछि सेते हमरो लाइफ हैप्पी हे परिवार संभावना रही छे वर्च्यू कोन वर्च्यू आर all the good traits of your personality good traits of your personality तुमरो पर्सनालिटी रे जते भलो दिग गुडी रही छि से गुडी को ही वर्च्यू कहा जाए से गुडी को ही वर्च्यू कहा जाए सपोज तुम पर्सनालिटी रे बहुत कंपैशन अछि ओके दैट इज अ वर्च्यू बीइंग कंपैशनेट इज अ वर्च्यू बीइंग ऑनेस्ट इज अ वर्च्यू being courageous is a virtue being impartial being non-partisan all these are virtues right and all these will lead you to eudaimonia eudaimonia means a happy life a fulfilled life okay से कहिथिले से डिफाइन्स वर्च्यू सो वर्च्यू को से डिफाइन करंती एज गोल्डन मीन बिटवीन एक्सट्रीम दुईटा एक्सट्रीम मझीर मीन को से कहती कौन ना वर्च्यू वर्च्यू मोस्ट ऑफ द टाइम कौन हुए ना कॉमन पीपल आमे माने समस्ते कौन करू ना एक्सट्रीम रे एक्ट करू ओके एक्सट्रीम्स रे एक्ट करू सो अरिस्टोटल कहउचंती एक्सट्रीम इज ऑलवेज बैड कौन सी जिनसर अति होची बैड सो वी हैव टू फाइंड द मीन राइट तो ये जदि मु गोटे एग्जांपल नेबी से जो गोल्डन मीन कथा कहउचंती से कोन कहउचंती ताहेले आमे देखिबा सपोज दैट इज कावर्डाइस 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 माने कोन भीरुता ओके तो ए बहुत डरी की रहउछ कावर्ड हे की रहउछ कावर्डाइस ओके ये हैला गोटे एक्सट्रीम दिस इज वन एक्सट्रीम भीरुतार एक्सट्रीम एंड देन देयर इज रेकलेसनेस 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 माने कोन ना अत्यधिक बेपरुआ हे जिबा कहार खातिर न करिबा राइट दिस इज रेकलेसनेस ये गोटे एक्सट्रीम कावर्डाइस इज वन एक्सट्रीम एंड रेकलेसनेस इज अनदर एक्सट्रीम ओके ए दुईटा एक्सट्रीम रो मझी रे आसीबो गोटे मीन ओके मीन जो थरे आसीबो जो वर्च्यू को हम कहिबा करेज ओके करेज so courage is the golden mean according to Aristotle it is neither cowardice it is nor recklessness but it is courage which is the value okay which is the virtue which everyone should follow in their life and not to go with either of the extremes okay this was according to Aristotle and the concept of golden mean the concept of golden mean तो याकू आमे इंडियन फिलोसफी रो बुद्धिज्म सहित कंपेयर करि परिबा जोथरे कि बुद्ध कहिथिले अबाउट द मिडल पाथ द मध्यम मार्ग right so this is somewhat a similar concept like Buddhism or the middle path okay the concept of golden mean so whenever there is a question about Aristotle in exam do not forget to mention this golden mean okay right all right so what happens so the gist of all these Plato Aristotle starting with Socrates so all of them the proponents of virtue ethics what they have told they have given importance to right character building okay so whenever you are a person of a right character what will happen that your judgments would be right
Okay, you will make right judgments. Right character will lead to right judgment. Okay, and right judgment would lead to right action. Right action. Okay, a right character will lead to right judgment, and right judgment would lead to right action. That is why building a right character becomes very, very important. Building a right character becomes very, very important, which is the core philosophy, the core idea behind virtue ethics, right? Okay. So then another देखिए यदि Aristotle कौन कहते ethics is not about rigid rules but about living wisely and virtuously every day, right? Ethics केवल गोटे rigid rule को follow करिवार ना नुहे but it is living wisely and virtuously every day. तेणु तेणु Aristotle कर गोटे बहुत सुंदर कोट आम समस्ते शुणी जो से कहती that excellent is not an act but a habit. Okay, we are what we do repeatedly. We are that which we do repeatedly. Okay, hence excellence is not an act but a habit. Excellence got a habit, and we have to pursue this character building activity every day. It is also never an act of a day. Okay, it is a lifelong project that we all should pursue, right? This was according to Aristotle virtue ethics. All right, so we have seen this three kinds of prescriptive ethics where we have read about what. First we read about deontology by Immanuel Kant. Secondly we read about consequentialism. The chief proponents were Jeremy Bentham and John Stuart Mills. And thirdly we saw virtue ethics. Virtue ethics जो जहार चीफ प्रोपोनेंट हेले किए ना Socrates, Plato and Aristotle, the ancient Greek philosophers. अच्छा अच्छा एठी आमे देखिबा आमे केते बुझिले आमे एथुरु जानिबा सपोज मु तुमको पचारिबी तुमे समस्त भगवत गीता विषय जानिछ भगवत गीता कोन ना भगवत गीता है महाभारत गोटे पार्ट जोटी गोटे कन्वर्जेसन चली गोटे कथबार्ता चली बिटवीन अर्जुन एंड श्रीकृष्ण अर्जुन एंड श्रीकृष्ण तो मुझे तुमको पचारि आम ये सब पढ़ी सारा पर अर्जुन और कृष्ण भितर किए डिओंटोलॉजिस्ट थिले आ किए कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट थिले ताहले तुम कौन कहब थिंक अबाउट इट ओके आम जदि भगवत गीता को देखिबा ताहले ड्यूटीर कथा स्वधर्मर कथा क्षत्रिय धर्मर कथा किए कहते श्रीकृष्ण कहते राइट श्रीकृष्ण कहते तेणु श्रीकृष्ण को आम कहीपर दैट ही वाज अ डिओंटोलॉजिस्ट देखंतु पूरा पूरी रिजिडली आमको काहाको डिओंटोलॉजिस्ट किंबा कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट कहि परिबा नाही किंतु एज पर भगवत गीतार श्लोक जोठी से कहउचंती स्वधर्मर कथा following your duty or following your duty as a kshatriya so सेठी से deontology रो कथा ही कहउचंती राइट तापर कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट के कृष्ण अर्जुन भितर जदि आम कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट देखिबा ताले सेथरो आम जानिबा को पाइबा जे अर्जुन जो अछंती से बहुत बेसी परिणाम विषय भाबुचंती व्हाट विल बी द आउटकम मो सामने रे मोर गुरु माने अछंती मोर भाई माने अछंती कजिन्स माने अछंती मोर एते ब्लड रिलेशंस अछंती राइट आम जदि युद्ध करिले ताहले कोन हबो ना हमर हमर एंटायर क्लैन हमर वंश निपात हे जिवो राइट सो अर्जुन भाबुचंती कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट व्यू पॉइंट रे तो सेठी श्री कृष्ण तांको आह्वान करजंती कि तुमे कॉन्सिक्वेंस परिणाम कथा भाव नहीं अर्जुन तुमे युद्ध कर कहीं युद्ध करबा होची तुम्हारा कर्तव्य इट इज योर ड्यूटी राइट सो दिस इज ऑल अबाउट द prescriptive ethics okay next we'll go to next we'll look at so ये जो हमें पढ़िले these are actually very important prescriptive ethics especially dimensions of ethics रे prescriptive ethics is very very important जेमति कि देखिबो तुमरो क्वेश्चन गुडा को एठी आसीची right discuss Aristotle's notions of virtue ethics and how it is conducive to private organization
and public transactions, right? तो आमे जो वर्च्यू एथिक्स पढ़िले एंड एरिस्टोटल कर नोशंस ऑफ वर्च्यू पढ़िले आई थिंक तुम्हें गोटे आंसर लिखिबा पोजीशन रे आसी जाइथिबो एंड हाउ टू राइट एन आंसर आमे डेफिनेटली मु तार स्ट्रक्चर एंड हाउ टू राइट एन आंसर हम तुमको बतेबी बट आई थिंक गोटे ओवरऑल आइडिया तुमको हेथिबो सेकेंडली आउ गोटे क्वेश्चन आसीथिला ओपीएससी 2022 रे with suitable examples elucidate both the positive and negative sides of consequentialist ethics if exclusively followed for governance तो ये से पचारछि जदि गवर्नेंस रे आमे केवल consequentialist ethics को exclusively follow करिबा ताहले कोन positive or negative हेई परिबो so these two were the previous year questions from this prescriptive ethics so it is very important that you understand the concepts and remember the terminologies of this entire prescriptive ethics आउ गोटे मध्ये क्वेश्चन आस्तिला जोठी एठी मेंशन करा जाय नहीं इट वाज अबाउट इमानुएल कांट कर जो कैटेगोरिकल इंपरेटिव आमे पढिले सेथरो गोटे डायरेक्ट क्वेश्चन आसीदिला व्हाट वर द प्रिंसिपल्स बिहाइंड द this deontology or categorical imperative of Immanuel Kant. Okay, so this was all about the previous year questions. Okay, so एथि सहित हमरो dimensions of ethics complete कले हमें वर्तमान आमे जिबा human values आडको ओके जोटा कि हमरो ethics and interface रो गोटे ethics and human interface रो गोटे मेजर पार्ट which is human value so value माने कोन value विषय सम्यक धारणा हमें पाइथिले प्रथम क्लास रे जोथरे म कहितली values are deeply held beliefs by human beings or the core beliefs of human beings जेमते honesty is a value okay integrity is a value compassion is a value आउ मध्ये म कहितली जे value को कहा जाय language of ethics and morality हमको कहे कोन this is right this is wrong and it provides us a framework okay an ethical framework to decide which is right and which is wrong okay it is a guide it acts as a guiding light but ethics and morality talks in the language of value जेमते algebra talks in the language of x and y algebra equation semti ethics talks in the ethics speaks in the language of values okay so this is a definition which says values may be defined as socially approved standards and goals that are internalized through the process of conditioning learning or socialization conditioning learning or socialization so this was a definition given by a sociologist whose name was R.K. Mukherjee. So there was a famous sociologist named R.K. Mukherjee and tanka hisabre value mane hochi these are socially approved standards and goals that are internalized through the process of conditioning learning and socialization so conditioning mane kono mane say activity conditioning mane kono repeated experience द्वारा through repeated experience okay repeated experience द्वारा आमे जो जिंस को gain करूचे जो mindset आमरो develop हेची through repeated experience suppose for telling truth हमको reward मिलची for telling a lie for hurting somebody हमको कौन मिलची ना punishment मिलची so से हिसाब रे छोटो बड़ो आमरो गोटे conditioning हे जायची brain रे गोटे जहा कहती wiring हे जायची okay wiring हे जायची about what is right and what is wrong that is known as conditioning and classical conditioning रो गोटे बहुत famous experiment अछि जोडा biology and sociology रे पिला माने पढंती जहा कुआ जे Pavlov's experiments okay Pavlov's experiment ठीक अछि socialization कौन socialization होची whenever a child is born से जानिनी कि socially approved way of living कौन so socialization is a process जो process रे an asocial individual is turned into a social individual
राइट जो थे सोसाइटी सहित बंचिबा सोसाइटी रो डिजायरेबल तरीका रे निजको आग को बढ़ेबा बा निजर एक्शन को से हिसाब रे मॉडिफाई करबा ताको कहा जाए द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन. So according to sociologist R.K. Mukherjee, so this is the definition which says values may be defined as socially approved standards and goals that are internalized जोटा अंतर्निहित होइथिबो through what? Through the process of conditioning, learning and socialization. Conditioning, learning and socialization. So this is the definition of human values. Okay. So आमे देखिबा features of human values कोन. Human value रो कोन features अछि. Firstly, human values motivates a person to act in the most desirable manner. ओके वैल्यूज कौन करे ना गोटे पर्सन को मोटिवेट करे गोटे सोशली डिजायरेबल मैनर रे एक्ट करबा पई. सेकेंडली इट इज द पावरफुल फोर्स अफेक्टिंग बिहेवियर. तुमरो बिहेवियर केमती हबो दैट इज डिसाइडेड बाय योर वैल्यूज. ओके इफ योर वैल्यू इज कंपैशन ताहले तुमरो एक्शंस रे कंपैशन देखा जिवो. फॉर एग्जांपल व्हेनेवर समवन इज इन नीड तुमे जाय कि ताको हेल्प करिवो राइट. व्हेनेवर जितेबले देखिथिबो लोक माने समर रे जिते बहुत स्कॉचिंग हिट पूरा खरा होता है से कर करती लोक मैंने पानी नहीं कि बाहर रखती सो दैट पशु पक्षी जो मैंने भी अच्छा शोषिला अच्छा से मैंने आसिक से पानी पी पारे. सो से जो एक्ट टा से मैंने कले दिस इज एन एक्ट दैट कम्स आउट फ्रॉम कंपैशन. इट इज अ कंपैशनेट एक्ट. सो सेटा ही इथरे कहूची पावरफुल फोर्स affecting behavior, right? Powerful force affecting behavior. Then thirdly, it gives direction and firmness to life and brings joy, satisfaction and peace of life. Values कौन करे ना जीवन को दिशा दिए. It gives direction. Okay, हाँ जब the life is actually आमे जब कहबा गोटे pathless land एते गुड़ाए रास्ता अछि को रास्ता रे मु जीबी तो तुम्हारो वैल्यू तुमको बतेइबो तुमे को रास्ता रे जीवो which path is right for you. It gives direction and firmness. Firmness माने कोन? Firmness माने होची स्थिरता 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 माने कोन ना लाइफ रे गोटे स्थिरता बा स्टेबिलिटी बा गोटे स्ट्रेंथ तुमको दबो. जेमते कहा जाए किछ लोक कहते किछ लोक एमिति थांती कि से माने पवन रे उड़ुथिबा पत्र भलिया हेइतांती. से पवन जुआड़े उड़े चलला से माने सियाड़े पळेले. सबले लोकन को मैनिपुलेट करबा बहुत इजी. ओके दे कैन बी इजीली मैनिपुलेटेड. दे कैन बी इजीली डेविएटेड फ्रॉम देयर गोल्स राइट. तम किछि भी करबा पई तुमे प्रवर्तई पारिबो because they do not have that moral ground. They do not have those values in their personality right. तेणु करी से माने they are just like a leaf. okay लीफ जार कौन डायरेक्शन नहीं से केवल विंड डायरेक्शन रे उड़ी चली. ओके सो वैल्यू कौन करिवो तुमरो पर्सनालिटी को फर्मनेस दबो स्थिरता स्टेबिलिटी दबो टू लाइफ एंड ब्रिंग्स जॉय. वैल्यूज कौन करे ना तुम लाइफ रे जॉय सैटिस्फैक्शन एंड पीस टू लाइफ आने. ओके जेमती कि विवेकानंद कहिथिले दैट मानव सेवा ही माधव सेवा. दैट मीन्स इन द सर्विस ऑफ people he got the feeling that service of mankind is service of God. So this gave him immense joy, satisfaction and peace in life. Okay so this is the role of values in human life. तब next हम जो देखिबा essential constituent of civilization. civilization माने हला सभ्यता. तो सभ्यता कहिले आमरो आमे जे देखिबा तार गुडाए कंपोनेंट अछि जेमति तार इकोनॉमिक कंपोनेंट अछि हला तार टेक्नोलॉजिकल दिग अछि राइट. सो गोटे सिविलाइजेशन केते उन्नत हां तार गोटे मेजर कंपोनेंट हला इकोनॉमी. तार गोटे मेजर कंपोनेंट हला हाउ टेक्नोलॉजिकली एडवांस इज दैट civilization. बट ता सहित values are also an important very essential component of
civilization जदि आमे इंडियन civilization उपरे आमे समस्ते as Indians proud feel करू. Why? Because of our virtues, because of our values, because of our Indian ethos. Okay, our Indian ethos constitutes not only this economy and technology but also values such as brotherhood universal brotherhood. ଯେତେବେଳେ ଆମେ वसुधैव कुटुंबकम गोटे श्लोक अच्छी अयम निज परोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम. हम जो वसुधैव कुटुंबकम कहूँ दैट रिफ्लेक्ट्स द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड. ओके, देन आमर इथोस रे आहुरी मध्य अच्छी अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव. आउ मध्य अच्छी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः. So we send love and goodwill to everyone, every living creature, everyone in the world. Sarve bhavantu sukhinah. So all these ethos, all these values, okay, all these constitute our civilization, a major component of our civilization, right? Then lastly, indication of character determines our ethical and moral choices. So values are the indication of our character. And what is character? Character is nothing but the sum total of your values. Okay, character is nothing but the sum total of your values. Okay, so a man of character or a person of character is a person of values. A person of character is a person of values. It determines our ethical and moral choices. Okay, our choices को determine करिवो किए ना, what values we carry. What values we carry will determine our choices. So these were the features of values. These were the features of value. All right. All right. So वर्तमान समय रे आमे सुनिथिबा the degradation of value देखा जाउछि. Okay, value रो degradation बा value रो erosion आमे ताको कहि परिबा. So जो value रो erosion society रे एवं individual रे देखा जाउछि. So what is the reason behind it? Let's explore what are the reasons behind erosion of values. Erosion of value हेबार reasons कोन? The first reason आमे जदि देखिबा it is materialism. It is materialism. Materialism माने कोन? भौतिकतार अभ्युदय, भौतिकतार अभिवृद्धि घटिबा, अत्यधिक अभिवृद्धि घटिबा materialism रे. Okay, so whenever materialism is given too much emphasis, then the moral side or the spiritual side is degraded, downgraded. For example, आमे recently एते गुड़ाए corruption cases देखिले, आमे एते जण individual को देखिले. For example, Vijay Mallya. For example, Vijay Mallya. There is Mehul Choksi. There is Nirav Modi. Okay, so all these people एमाने कोन करुथिले ना निजर संपत्ति बढ़ेबा, materialistic जिनस को गैदर करिबा, एथरे से माने indulge रहिले. So what they compromised on is the morality or the ethics. Okay, so that is why their life became miserable. All of them are not leading a life of peace or happiness or prosperity now. Okay, so materialism, so increased materialism is never a very good sign. It is true that a minimum amount or a certain amount, a samyak amount of materialism is definitely needed to lead a happy life, but just running after it erodes other values, it erodes the ethicality and morality of an individual. Okay, then आमे देखिबा vacuum in social cohesion and stability. एटा कोहा जाय जे आगरु सोसाइटी रे एकता बा टुगेदरनेस बा ब्रदरहुड रो भावना, यूनिटी रो भावना बहुत अधिक थिला, जोटा एबे धीरे धीरे डिग्रेड हबारे लागि छी.
ओके इट इज डाउनग्रेडिंग वैक्यूम देखा जाउची गोटे शून्यता देखा जाउची इन सोशल कोहेशन एंड स्टेबिलिटी अच्छा मु गोटे टर्म कहूची तुमको जहाकू कुहा जाउची अर्बन एनोनिमिटी अर्बन एनोनिमिटी अर्बन एनोनिमिटी कौन अर्बन अर्बन एरिया में ताको कहू जोटा कि शहरी अंचल को आम अर्बन कहूँ एनोनिमिटी माने केही काहाको चिन्हु नाहंती ओके nobody is known to the other suppose अर्बन एरिया रे ए जिनसटा बहुत देखा जाए दैट तुमर घर बहुत पाखा पाखी हेथिबो तुम्हें पड़ोसी हेथिबो since 10 years 15 years 20 years but you do not know the name of your neighbor तुम तुम पड़ोसी ना तुम्हें जानी न से कौन करती तुम्हें जानी न से को असुविधा देखी गति कर लाइफ रे कौन चली तुम्हें जानी ना राइट सो से फेनोमेनन को कहा जाए अर्बन एनोनिमिटी जोटा कि रिड्यूसिंग सोशल कोहेशन एंड स्टेबिलिटी रो गोटे मैनिफेस्टेशन बा फॉर्म बोली हमें कहि परिबा अर्बन एनोनिमिटी को राइट then next reason for erosion of value जदि हमें देखिबा it is moral degradation as a society हमर नैतिक जो स्थिति सेटा डाउनग्रेड हेबारे लागिची it is being degraded corruption nepotism like misappropriation mismanagement ए सब जिनस को हमें इंटरनलाइज कर देछे एंड ताको बहुत नॉर्मल हिसाब रे ट्रीट करूछे करप्शन जमती आम सिस्टम रो गोटे बहुत नॉर्मल जिनस ओके सो दिस शोज द मोरल डिग्रेडेशन एज अ सोसाइटी moral degradation as a society as a government as a system okay next ame fourth reason for erosion of value जदि देखिबा ताहले it is disappearing sources of value disappearing sources of value कौन प्रथमे आमे जानिबा sources of value कौन value actually को source रो आसुतिला value को source रो आसीबो गोटे individual रो जीवन रे value को source रो आसीबो first हला family okay family values comes from family first okay family रे आसंती parents siblings grandparents etc but कौन होची ना with the advancement of modernity industrialization what we are seeing is the phenomenon of nuclear families okay so joint families अब देखा जाओ नहीं joint family फ्रैगमेंट है कि वर्तमान न्यूक्लियर फैमिली रे परिणत होची सो जो फैमिली मेंबर्स माने इधर द पेरेंट्स आर ओवरबर्डन्ड और with their work or they do not have the time for the children okay so all and there are no grandparents living with them okay so there is no one to inculcate or instill good values in the children okay that is a disappearing sources of values एटा फैमिली गला आ गोटे सोर्स हमें कौन कहबा इट इज टीचर्स राइट स्कूल कॉलेज विद्यालय महाविद्यालय ए सब टीचर्स वर एक्टिंग एज रोल मॉडल्स किंतु वर्तमान समय देखा जाउची दैट इवन टीचर्स आर indulged in various kind of unacceptable activity and the kind of respect they were commanding that is degrading by day and day okay so the sources of values is disappearing somehow okay तो तापरे जदि हम देखिबा रिलीजियस there are religious leaders वर्तमान समाज रे मध्य religious leader मानकर कोनसे अभाव नहीं किंतु बहुत समय हम कोन देखुचो जो religious leader माने हमको प्रीच करूचंती प्रवचन दउचंती बहुत समय रे हम देखिया को पाउछु that they are indulged in crimes and very heinous crimes right so this all will come under disappearing sources of value so जो माने हमर source of values हबा कथा okay से source of values ही देखा जाओ नहीं so they are themselves being disappeared so which is a reason for erosion of
values or degradation of values. Okay, तापर लास्ट पॉइंट जदि हमें देखिबा सोशल मीडिया एंड इट्स एविल. ओके, वर्तमान समय सोशल मीडिया गोटे है वाइड स्प्रेड, वाइडली एक्सेप्टेड, वाइडली यूज्ड मीडियम, राइट, जो आमर फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, various kind of things asuchi, and everyone is using it. Almost everyone having a smartphone is using social media. But social media रे बहुत समय कौन देखा होची ना, there is instances of hate speech, that is instance of fear mongering, किछि हेई नथिबो, राइट, मिस इनफॉरमेशन, डिसइनफॉरमेशन स्प्रेड करके fear spread कराउची among individual. Okay, there is instances of cyber bullying, cyber bullying रे कौन होची ना, an individual is bullied, जोटा अगर स्कूल कॉलेज रे होतला, that bullying is happening in social media in front of the world, जोटा कि a major reason behind mental health issues specifically among the young mass, the young population. Okay, so this is सोशल मीडिया. एंड आउ गोटे फिनोमेनन जोटा को जो जहाँ विषय एबे बहुत कथबार्ता कराउछि, इट इज द इफेक्ट ऑफ इको चैम्बरिंग इफेक्ट, राइट. सोशल मीडिया रो इविल गोटे इको चैम्बर. तो इको चैम्बर रे कोन होछि, चैम्बर माने हम जानि छै गोटे कन्फाइंड प्लेस, एंड इको माने होछि बारंबार प्रतिध्वनि सुना जिबा. सो कोन होछि ना, ऑल द सोशल मीडिया यूजर, आमे इंस्टेंस जदि नबा यूट्यूब रो कि इंस्टाग्राम रो, whenever you are liking or commenting under a certain type of content, जो टाइप ऑफ कंटेंट रे तुमे लाइक और कमेंट करूछो, कोन करिवो ना, यूट्यूब रो एल्गोरिदम किंबा इंस्टाग्राम रो एल्गोरिदम तुमको से रिलेटेड जिनस ही, से रिलेटेड फीड ही तुमरो आसीबो, राइट. सो तुमे भाबिबो दैट आई नो अ लॉट ऑफ थिंग. ओके, मु बहुत नॉलेजेबल हो जाइए, बहुत वे एते गुड़ा इनफॉरमेशन मुझे जानी देछि, किंतु कौन होतबो ना, यू विल बी जस्ट वाचिंग द सिमिलर काइंड ऑफ कंटेंट, एंड तुम्हें गोटे इश्यू रो केवल गोटे साइड देखुथबो. सपोज यू आर अ सपोर्टर ऑफ अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, तो तुम्हें कौन करिवो ना, तुम्हें कौन करिवो दैट तुम्हें जतबे से पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी रो कोन से कंटेंट को लाइक करिछो, देन से बळे कंटेंट ही तुमको रेकमेंड कर चलथिबो. तो तुम्हें गोटे इश्यू रो केवल गोटे दिग को ही देखिथिबो. ओके, you would have seen just one side of the issue. ओके, सो द वन साइड ऑफ इश्यू को देखिए तुम्हें जब भाबुथिबो कि आई नो एवरीथिंग, तो से बळे कंडीशन रे, सिचुएशन रे कोन देखा जिवो ना, डिक्रीज लेवल ऑफ टॉलरेंस रो डिक्रीज देखा जिवो, राइट. टॉलरेंस माने होची सहिष्णुता. तुम्हें तुम ओपिनियन एंड तुम व्यू को नहीं कि एते रिजिड हे जिवो जे तुम्हें अन्य कहार ओपिनियन सुनिबा को प्रस्तुत नथिबो, सेटा को ही कुहा जाय इनटॉलरेंस, असहिष्णुता. एवं हेलेन केलर कहितले दैट tolerance is the highest fruit of education. You cannot tell yourself educated if you do not have tolerance in your personality, right. tolerance कमिबा सहित आमे माने देखुचे ना, empathy रे भी डिक्रीज देखा जाउची, राइट, ड्यू टू दिस इको चैम्बरिंग इफेक्ट द्वारा आमे केवल एक देशदर्शी वन साइडेड व्यू को ही देखुचे एवं ताको सपोर्ट करूचे, एंड आम पर्सनालिटी रे आमे रिजिड हे चलीचे, एंड वी आर लूजिंग फ्लेक्सिबिलिटी, वी आर लूजिंग टॉलरेंस, एंड वी आर losing what? Empathy. Okay, so these are the reasons for the erosion of values. Okay, so with this ame आजिर क्लास को एठी रखिबा. so next class रे ame ethics and human interface रो बाकी जहा रहिला ताको पढ़िबा, ता सहित आमे attitude मध्य आरंभ करिबा. so thank you so much for your patience. Thank you.